Tell me about your father and your relationship. He's given all his life to multiplex, like, and he always wanted to prove himself that, you know, he's right. He had to. Comes from a family where everybody used to think he's a Dumbo. ऐसा मुझे ऐसा लगता था, but no, he was the true pillar of the family. What do you mean by dumb? कि ऐसा लगता था कि वो उसको कुछ आता नहीं है, करता नहीं है, ऐसा? क्या है ना, मेरे पापा बहुत ओबीस थे, वेरी ओबीस. हमारे फैमिली में ओबेसिटी है प्रॉब्लम, तो पापा बहुत ओबीस थे. सो उनके बारे में ना एक सर्टन ये चीज़ हो गई थी, होता है ना कि ये तो गोलू है, इसकी हमें कैसे शादी करानी पड़ेगी. बट ही ऑलवेज बोलते ना एक पैर पे खड़े रहते थे टू प्रूव to everyone that he loves everyone. He loves his brother, he loves his sister, and ultimately when the time came, he's the one who took care of everyone. So Papa used to be extremely busy. Okay. अपना काम बनाने. Yeah, and he always, so मेरे दादा ने जब उनको मल्टीप्लेक्स दिया, so he was like, I just don't want to sit. I want to expand it. हमारा सिंगल स्क्रीन होता था, so उन्होंने उस वक्त लोन लेके मल्टीप्लेक्स बनाया पूरा on his own, like a good 5-screen multiplex. So I used to see him breaking his back. I used to see him working hard. So I think I've picked up those qualities from him only. तो ये जिद है ना फैमिली में ही चलती है. मेरे दादा भी ऐसे थे. मेरे दादा भी अपने फैमिली में प्रूव करना चाहते थे कि who he is. मेरे पापा भी अपने फैमिली में प्रूव, मेरे में भी वही जिद है. And I hope this tradition continues forever.